Today in this lecture I will discuss with the Cartesian product of two sets and introduce you a very important topic, that is the relations and functions. So my today's topic is going to from Cartesian product of two sets to the functions, which are very important in the field of mathematics. It's a very important, and for NDA type it's very useful. You'll find two questions probably based on function relations, so they should be considered very clearly how to do these questions. So my one point is that how to deal the questions. So my first part is to do the Cartesian product of two sets. My Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets, how this? Suppose I got, let A is the one set 1, 2, 3 and B is another set, say 2, 3, 5, 6, like this. We got this. Cartesian, when I talk about the Cartesian, I come across the geometry, that is a Cartesian geometry when you have x-axis and y-axis. Similarly here, there is a relationship between that also, because what is the plane is r cross r. I'll come to it afterwards. Let's say, what is Cartesian product? Product means multiplication. A cross B is what? Set of all x, y such that x belongs to A and y belongs to B. It's an ordered pair. Is a set A cross B is a set of ordered pairs. Is a set of ordered pairs. Where set of ordered pairs means there is an order x and y. The x belong to first and y belong to second. A cross B, Cartesian product of two sets A and B, is the set of all ordered pair x and y. X and y means x belong to the first one A and B belongs to the y belong to the B, x and y. A cross B and B cross A, when I talk about B cross A, will be different. Okay, let me write for A cross B for this. This set is 1 and 2 and 1 and 3, 1 and 5, 1 or 6, naturally 2 and 2 and 2 and 3 and 2 and 5, 2 and 6, 3 and 6, 3 and 2, 3 and 3 and 3, 5 and 3, 6. This set of order pairs. When I got the 2 points A and B, then A cross B can be written like this, right? Now, well, friend, how many these element A cross B contain the elements? First question is how many number of elements in A cross B? It is nothing. You'll find there are 3. They are this 4. So one taken as 4 times, the second 4 times, third 4 times. There are 12. Naturally, number of elements in A into number of elements in B. This is the one. First of all, number of elements in A and number of elements B मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा होगा बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. एक बात और ध्यान रखने वाली बात, A क्रॉस B करेंगे तो हमने ये 12 एलिमेंट आ गए. अब हमारे पास क्या था कि 2 और 3 यहाँ कॉमन थे, 2 और 3 कॉमन थे, दोनों में 2 एलिमेंट कॉमन थे. तो A क्रॉस B में और B क्रॉस A निकालेंगे, उसमें कितने कॉमन होंगे? अब मैं B क्रॉस A निकालने की बात करूँगा. B क्रॉस A का मतलब होगा उल्टा. उल्टा मीन 2 and 1, 3 and 1, 5 and 1, 6 and 1, 2 2. ये कॉमन होगा. 2 2, 3 2 3, 2 3, 3 2, 2 5, 6 2, 2 3. ये वाला कॉमन होगा. 3 3 कॉमन होगा. ओके, 3 5 5 3, and therefore you will find these are the 4 thing common. B cross A करेंगे तो B cross A is not equal to A cross B, but उसमें common element कितने होंगे? कॉमन एलिमेंट कितने होंगे A क्रॉस B में और B क्रॉस A में? उसका आंसर n का स्क्वायर. यदि n कॉमन है हमारे, n कॉमन है, यदि यहाँ 2 कॉमन है तो 4 हमारे यहाँ पर कॉमन होंगे A क्रॉस B में और B क्रॉस A में. तो मैंने क्या बताया? हमने बताया कि एक सेट हों A और B, तो A क्रॉस B क्या होगा? उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सूट के टू सेट कहा जाएगा. उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज सेट ऑफ द टू, यहाँ पर 2 हम कार्टेशियन ऑर्डर पेयर का सेट कहेंगे. A और B, X और Y की बात करेंगे
तो ए और बी में एक्स जो होगा वो ए से होगा पहले वाले से और बी से। यदि बी क्रॉस ए करूँगा तो एक्स जो होगा बी से होगा और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट 2 1 और 2 और 2 1 में दोनों में अंतर होगा। देयरफॉर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई जो हमारा होगा वो इक्वल टू y और x होगा। दे आर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट, दे आर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट, सो देयरफॉर दे आर डिफरेंट इन दिस केस। सो एक बात ये बताई। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब a क्रॉस b और b क्रॉस a की बात करने के बाद मैं इसका अलजेब्रा बता रहा हूँ। जो हमारे पास जो एक बात हमने बताई कि ये हमारे दो सेट हों a और b, इनमें कॉमन एलिमेंट दो होंगे, तो a क्रॉस b में और b क्रॉस a में n स्क्वायर होंगे। दैट इज़ वन पार्ट। मेरा अगला जो बातें हैं वो मैं करना चाहूँगा कि ए क्रॉस बी की हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी। ए क्रॉस बी यूनियन सी हो तो ये बराबर होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। पहली बात, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि यहाँ क्रॉस में यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो क्रॉस जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वो डिस्ट्रीब्यूट इंटरसेक्शन पे भी होगा। और दोस्तों यदि ए क्रॉस बी माइनस सी है तो भैया यहाँ पर ए क्रॉस बी और माइनस में ए क्रॉस सी भी होगा। पहली बात ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनियन इंटरसेक्शन और दिस वन, ये बात पक्की है। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की बात करूँगा तो यहाँ बात आई हमारी, इट डिफाइंड लाइक ऑर्डर पेयर ऑफ टू सेट्स ऑफ ए एंड बी। अब मैं चलता हूँ अलग एक और जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है हमारा relation means connectedness, relation means a pattern, relationship means a relation between the two, means a definite manner of relatedness, how the two things are related। relationship की बात करेंगे तो मैं बात करूँगा रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप हमेशा दो में होगा, एक्स और वाई में होगा। तो एक्स और वाई के बीच में जो पेयर बनेगा, पेयर की बात करेंगे, वो हमारा उसकी बात हमारा रिलेशनशिप होगी। तो रिलेशनशिप की लेट्स टॉक अबाउट द वन, आई गिव एग्जांपल। लेट्स ए कंटेन द सेट 1 2 3, ओके, बी कंटेन्स 4 9 suppose 16. So let me make a cross b. A cross b is what? 1 and 4 and 1 and 9, 1 and 16, 2 and 4, and here 2 and 9 and 2 16. Well friend, 3 and 4, 3 and 9, and 3 and 16. Suppose there is x and y here. R is a relation. R is a relation. A relation from A to B, A on B, such that we write like x related to y. I write suppose x is the square root of y. Is square root of y. Suppose I got this relation. तो which are the relation में कौन कौन से इस R is a set में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन कौन से आएंगे? R में कौन कौन सा आएगा? x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ y है, x इज स्क्वायर रूट ऑफ y है। तो कौन कौन से आएंगे? नंबर 1 ये आएगा, ये वाला 4 का स्क्वायर रूट 2 and 4 आएगा, और 3 और 9 आएगा, दो आएंगे। हमारे पास जो ये रिलेशन आएगा ये दो आएंगे। रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज द कनेक्टेडनेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ 2 1, and this is here A 2 4 और this one A क्रॉस B और B क्रॉस A में ये रिलेशन होगा। सपोज इसी क्वेश्चन में ये पूछूं कि यहाँ पर ये पूछूं कि R एक ऐसा है रिलेटेड, और R is a relation from A to B and B such that R related, such that X related to what? Y, where X belong to the A and Y belong to B, such that difference of that Y minus में X is equal to 8. तो what will be relation here? क्या होगा इसमें? relation क्या आएगा, क्या सेट आएगा? दोनों का डिफरेंस जो है वो दिस माइनस दिस, ये 8 आ गया, 1 and 9 is one answer, okay, done. And this is
15, this is 2, this is 7, this is 12, this is this, this is 6. There is only one element. There is only one element. Singleton set. There is only one element. So here relationship like this. Relation means A from to B. हमारा पास ये वाली बात करते हैं तो ये इस तरह का सवाल. मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैं आप और एग्जाम्पल दूंगा. बिफोर आई गो फर्दर मैं और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिसमें कि रिलेशन की बात करें. आर इज ए रिलेशन ऑफ सेट ए set A is what? Let me take the set is equal to 1 2 3. That's simple. Okay, why to take 1 2 3? Let's take 1 4 5. कुछ भी ले लें. This is 1 to 5 to the set B. Set B. B को क्या लें? बोलो B को क्या लें? B को ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Let's say 6 and 8. क्या करेंगे ऐसे? 4 to 5. ये ले लिया हमने. दो सेट ले लिए. Are defined by, the relation is defined by what? Defined by related this one, this is this, x related to y in such a way that x divides y. Okay, बोलिए कौन कौन सा आएगा. पहले मैं a क्रॉस b निकालूं. a क्रॉस b निकालने के बाद मैं बात करूं तो मेरे कौन कौन से आएंगे. उस R में कौन कौन से आएंगे. R में कौन कौन से आए. आप देखते हैं x डिवाइड y. 2 1 होगा. 2 2 आ जाएगा क्योंकि 2 को डिवाइड करता है. 2 3 नहीं आएगा. 2 4 आ जाएगा. 2 और 4 आ जाएगा. 2 और 6 आ जाएगा. 2 और 8 आ जाएगा. और 4 डिवाइड 1 नहीं. 4 डिवाइड बाई 2. 4 डिवाइड बाई 4 4 भी आ जाएगा. 4 6 नहीं आएगा. 4 8 आ जाएगा. 5 का कोई नहीं आएगा. That's all. These are the numbers. These are the total. These where we find the relationship x divides y. दोस्तों, this is one. I just find the relation. Didn't write A cross B, but I wrote the out of those what are the one. Now next, इसका हम कहीं पूछें कि what is domain of R? What is domain of R? And what is the range of R? What is range of R? Domain of R is what? Domain of range R. Domain of R is जो हमारा पहली एंट्री है 2 2 2 2 4 4. तो बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो हम 2 और 4 आए हुए हैं, बस ये होगा. What is the range is equal to 2 4 6 8. 2 4 6 8. 4 पहले आ लिया. जो सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट एंट्री है, जो फर्स्ट एंट्री वाले हैं वो उसका डोमेन होंगे और जो सेकंड वाले होंगे वो उसका रेंज में होंगे. दो से तो हम किसी फंक्शन रिलेशन का डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं. आइए दोस्तों, मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताऊंगा. टाइप ऑफ रिलेशन. व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर देयर. देन वन टाइप ऑफ रिलेशन हम आपको डिस्कस करेंगे. हमने बताया कि रिलेशन क्या होता है. रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट थे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में हमने बात की. और कार्टेशियन रिलेशन जो है उसका एक पार्ट होता है. तो मैं रिलेशन को क्या कह दूं. लेट मी डिफाइन रिलेशन. रिलेशन इज ए, आई कैन से, इज अ पार्ट ऑफ द ए क्रॉस बी. ए और बी का जो पॉसिबल हमारे पेयर बनते हैं उसका एक पार्ट होगा. तो पार्ट होगा तो हम क्या करें, हम उसकी बात करेंगे. तो भैया उसमें इसका मतलब सबसेट है. इसका मतलब ए रिलेशन इज ए रिलेशन from A to B. A relation from set A to set B is subset of A cross B. Remember this part. This is very important. A relation from A to B is a subset of A cross B. Before I said going to type of the relations, let me say a very important type of question. I said relation is what? Relation is a subset of A cross B. A relation is a subset of A cross B. A relation
I defined as subset of A cross B. Now let me ask very simple question. Suppose I got a set A, number of in that element is suppose 3, number of element in that is equal to suppose equal to 5. There are 3 elements in this. Then what is number of elements in A cross B? A cross B will be have number of elements in A into number of elements B is equal to 3 into 5 is equal to 15. Then my next question, how many relation can be of A to B? How many relation can be from A to B? How many relations? Relation is a subset of A cross B. My question is number of relation. What is number of relations? Number of relations I talk will be what? Number of relations is a number of subsets of A cross B. So how many elements are in the A cross B is 15. Therefore number of subset is equal to 2 raised to power 15. This is the number of subsets of a set set containing n elements is equal to 2 raised to power n. We have done it earlier. The number of subsets of a set containing n elements is 2 raised to power n. I repeat, this is a very important question, has been asked in many competitive examinations. Number of elements in suppose in a set A is 3 and 5 in B, then total A cross B element is equal to what? 15. The answer of number of relation will be 2 raised to power. This is the, so here is the one relationship. So number of elements, number of relation between, suppose number of elements is in this case is n, this is m, the number of relations possibly will be equal to 2 raised to power m into n. This is the one relation. This is the what we go with it. So first relationship. Now I am going to do the type of relationship. Types of relations. Number 1 is a void relation. Void relation means there is no relationship, it's empty. Void relationship is set A is there, then this null set, it is a relation in this relation called void or empty relation. These are empty relations where there is no element available in the relation. There is no x related to y. There is an empty void relationship. Number 2, universal relationship. Universal relationship means this is equivalent to A or B, A cross B, A or cross A. All elements are related to all, every relationship. Then A cross A cross A, A cross B, a universal, that every x related to the other y. This is a relationship. The next one is the identity relation. Identity. A cross A set A cross A. The set A is a set. Then identity relation is set of all A and A such that A belong to A. This is the I belong to A. This is identity relationship where A related to itself only. It is only a relationship where a element is related to itself, no other. This is called identity relationship. Now next one is reflexive. This is also called reflexive. Reflexive. X related to X. The second one is symmetric. Symmetric means what? When X related to Y, then Y also related to X. This is called symmetric relationship. When this is relations, when X and Y belong to R related to this, for all X and Y belongs to A and A cross A की बात कर रहा हूँ. Number 6, we are transitive. Suppose A related to B and B related to C, then A related to C. Here A, B, C. A related to this is A related to B, B related to C. A
A is parallel to B is parallel to C, therefore A will be parallel to C. A is a triangle congruent to what? B triangle congruent, then is congruent, B congruent to C, therefore A will be congruent. These are called transitivity. Transitive. What next one is what? Antisymmetry. Antisymmetry. Antisymmetric what? A related to B and B related to A, only one when A is equal to B. When A is equal to, this is the only possibility when A is equal to B, no other possibility. So we have this is. So then another we have got a very important relationship called equivalence relation. Equivalence relation. All the three properties, reflexive, symmetric, transitive. If any relationship, any relation R holds reflexive, symmetric, transitive, is called equivalence relation. This is called equivalence relation. Equivalence relationship. This is. In my next video, I'll talk to you the question based on relations that has been asked in previous questions of NDA. Wait for that next question. Thank you.